This is the previous lecture. We have discussed before nucleophilic addition to carbonyl compound. Structure and reactivity of carbonyl compound we have discussed. Uh, Aldehydes are more reactive electronically and sterically as compared to ketone. We have discussed in previous class. Addition of hydrogen cyanide, addition of alcohol in which we obtain hemiacetal. And another molecule, this is the glucose is the hemiacetal form, ketone is in hemiacetal form. This is the acid catalyzed reaction of hemiacetal formation, acid catalyzed reaction. This is base catalyzed formation of hemiacetal. Acetal formation, two-step. Acetal formation is a two-step reaction in which, in first step, hemiacetal form. In the second step, acetal form. Identify. There are two acetal groups in sucrose. So this was the previous lecture. Now we will start. This is the lecture of today. Mm, yes, we have discussed because the previous lecture has link with the current lecture. Acetal formation. We have discussed mechanism of acetal formation, hemiacetal formation by acid catalyzed reaction as and base catalyzed reaction. And we have discussed acetal formation. The acetal formation, it has two steps. First hemiacetal formation, then acetal formation, and we have discussed some points related to hemiacetal and acetal. Acetal are more stable as compared to hemiacetal, and acetal act as protecting group. Now we are going to discuss mechanism of acetal formation. Hydrolysis of acetals as protecting group and addition of bisulfite to carbonyl. So this is the lecture 9, acetal formation and as protecting group. Acid catalyzed acetal formation. Uh, we have discussed there are two mechanism of hemiacetal formation: acid catalyzed mechanism and base catalyzed mechanism. Hemiacetals are formed by two mechanisms, but acetal, I mean the second step of hemiacetal to acetal, the second step is always acid catalyzed mechanism. So we can say hemiacetal uh, can be formed by two mechanisms, acid catalyzed as well as base catalyzed, but acetal is formed by only acid catalyzed mechanism. So acid catalyzed acetal formation is step 1. We have discussed in previous lecture. This is step 1. This is the carbonyl, maybe aldehyde or ketone. This is the alcohol in acidic medium, acidified alcohol. This like more electronegative oxygen attack on this proton, abstract this proton like this, and in the acidic medium, this electron pair of oxygen attack on this electrophilic carbon. This is nucleophilic in nature and this is electrophilic in nature. So a nucleophile attack on this carbon. This is nucleophilic addition reaction. We are talking about nucleophilic addition reaction. The addition of alcohol to carbonyl compounds and shifting of pi electron towards this oxygen for neutralization. In result, we get this product, this one. This is the intermediate alcohol molecule, uh,
has been attached with this electrophilic carbon. Now the another alcohol abstract this proton, the molecule will be neutral and we will get hemiacetal. Alkoxy group is attached and hydroxy group is attached. If two groups, alkoxy and hydroxy, they will be present, it will be hemiacetal, and this is the removal of acidic alcohol. So this is the first step. We have already discussed hemiacetal formation in acidic medium. The second step, this is the second step in which acetal will be obtained. This is the hemiacetal, again react with acidified alcohol. Alcohol in acidic medium, the OH, this OH abstract this proton, and this is the H2O as positive charge. It will be this electron pair shift towards this carbon. This OH2 is the driving force, and this OH2 is removed. By the removal of water molecule, we will obtain this intermediate. Now, this is the electrophilic carbon, and this alcohol, again, this neutral nucleophilic oxygen, lone pair attack on this electrophilic carbon, shifting of pi electron towards oxygen. Now you will get this product. O alkoxy is present here, and this alcohol is here. The hydrogen in the form of H plus abstract by ROH, then you will get acetal. Acetal has two alkoxy group. This is the previous alkoxy group and this is the current alkoxy group. Two alkoxy group, the presence of two alkoxy group shows that this is acetal. So acetal is obtained by acidic medium. This is the comparison between acetals and hemiacetals and the importance of acetal. Acetal are more stable than hemiacetal. Acetal can be isolated because it is stable, so it can be isolated. Cyclic hemiacetals or acetals are more stable than acyclic. यानी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो हेमी एसिटल्स हों चाहे वो एसिटल्स हों, वो एसिटल्स हों, वो ज़्यादा स्टेबल हैं एज कम्पेयर टू ए साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के, और एसिटाल जो हैं वो हेमी एसिटाल से ज़्यादा स्टेबल हैं. ये चीज़ दोनों बातें हमारे सामने हैं. Hemiacetals are formed by acid and base catalyzed medium. We have discussed. Acetals are formed by only acid catalyzed medium. सिर्फ एसिड कैटेलाइज, इट मीन्स के एसिड कैटेलाइज मीडियम के अंदर हेमी एसिटल भी बन जाएगा, एसिटाल भी बन जाएगा, और बेसिक मीडियम के अंदर हेमी एसिटाल बन जाएगा, एसिटाल नहीं बनेगा. तो हेमी एसिटाल जो है वो स्टेबल नहीं है, तो एसिडिक मीडियम के अंदर स्टेबल एसिटाल बनेगा, बेसिक मीडियम में अनस्टेबल हेमी एसिटाल बनेगा. Acetal formation is not favored when ketones are treated with simple alcohol and HCl. यानी एसिटाल फॉर्मेशन इज नॉट फेवर्ड. अगर कीटोन हमारे पास सिंपल अल्कोहल हो और HCl हो तो फेवर नहीं करती. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है, साइक्लिक अल्कोहल है, यानी ऐसी अल्कोहल जो डायोल है उसमें वो फेवर करती है ताकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाए. साइक्लिक एसिटाल फॉर्मेशन इज फेवर्ड, यानी सिर्फ एसिटाल फॉर्मेशन फेवर नहीं करती. साइक्लिक एसिटाल फॉर्मेशन इज फेवर्ड व्हेन अ कीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सिस ऑफ 1,2-डायोल एंड ट्रेस ऑफ एसिड. यानी 1,2-डायोल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप में, ताकि वो साइक्लिक एसिटाल फॉर्मेशन कर लें. फॉर एग्जांपल दिस इज कीटोन एंड दिस इज एक्सिस 1,2-डायोल, जिसको हम ग्लाइकोल भी कहते हैं. In the presence of acidic medium, it favored cyclic acetal. ये दोनों दो अल्कोहल हैं तो दोनों एक एक करके लग जाते हैं अल्कोक्सी ग्रुप की तरह, और ये एक साइक्लिक एसिटाल विल बी ऑब्टेन. Acetal are acted as protecting group.
प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं? दो द ग्रुप्स, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनको कोई अगर हम चेंज कर दें तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी ना करें, और जब रिएक्शन हो जाए तो इजीली रिमूव होकर दोबारा उसी फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाए। ऐसे इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, जैसे अभी कीटोन है, कीटोन के साथ कोई रिएक्शन हम करने जा रहे हैं, एक और की कोई और भी डबल बॉन्ड मौजूद है, हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं डबल बॉन्ड को, हमें मालूम है कि जी डबल बॉन्ड रिड्यूस करेंगे तो कीटोन भी रिड्यूस होकर अल्कोहल में चला जाएगा, क्योंकि वी आर यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम क्या करते हैं, कीटोन को एसीटाल में अल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में हम एसीटाल में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाता है, अब हम रिडक्शन करवाते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन प्रोटेक्टेड है। ये जो एसीटाइल है ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। अब इसको हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दोबारा से कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये दोबारा कन्वर्ट हो गया और एसीटाल ख़त्म हो गया, और हमारा जो टारगेट था कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में करना था वो भी अचीव हो गया। तो इसको हम एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप भी इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है इट हैज़ हाईली इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जब भी आप सिंथेसिस करने जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रोटेक्टिंग ग्रुप हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसीटाल जो है दे आर यूज एज प्रोटेक्टिंग ग्रुप। जैसे यहाँ मैंने आपसे कहा कि जब आप कोई एसीटाल बना हुआ है, इसकी आप एसिडिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये दोबारा से एल्डिहाइड और अल्कोहल में अलग हो जाएगा। दैट्स वाई एसीटाल आर यूज एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप। इसी तरह ये देखें साइक्लिक एसीटाल है, जब इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दोबारा ये कीटोन और 1,2 डाइऑल में चला गया। तो हाइड्रोलिसिस करने पे अगेन जब आपने इसको रिएक्ट करवाया अल्कोहल के साथ इन एसिडिक मीडियम, देन हेमी एसिटल एंड एसिटाल फॉर्मेशन, और जब उसको दोबारा से एसिडिक मीडियम में लेके जाएंगे हाइड्रोलाइज करेंगे, देन अगेन इट इज कन्वर्टेड इनटू कीटोन और एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। दिस इज द प्रोटेक्शन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोटेक्शन। ये कीटोन है, दिस इज द कीटोन, कीटोनिक ग्रुप, और ये एक एस्ट्रिक ग्रुप है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जनाब ये जो एस्ट्रिक ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाए अल्कोहल में। तो अगर आप कोई रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये एस्टर भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, और ये कार्बोनाइल भी कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। लेकिन हम सिर्फ एस्टर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वी विल यूज़ हेयर प्रोटेक्टिंग ग्रुप, एसीटाल फॉर्मेशन हम करेंगे एज अ प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और इसको फिर रिड्यूस करके इसको अगेन कन्वर्ट कर लेंगे कीटोन में। तो अब हमने क्या किया, 1,2 डाइऑल इस्तेमाल किया, एसिडिक मीडियम किया, तो जो कीटोन है इट इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाल, साइक्लिक एसिटाल फॉर्मेशन, और ये एस्टर अब फ्री है फॉर द रिएक्शन। It will not participate. This cyclic acetal will not participate in the reaction. Now we are using lithium aluminum tetrahydride in presence of ether, diethyl ether, as a reducing agent. Uh, in presence of water, the ester is converted into CH2OH, alcohol, by reduction. Ester is converted, this is the derivative of carboxylic acid, it is converted into alcohol by reduction. Again, now we have achieved our target. Now, by the hydrolysis in acidic medium, the cyclic acetal is converted into ketone again. So now this is our target product. So this is the use of acetal as protecting group. Acetal are stable in basic medium. ये भी एक important चीज़ है। Acidic medium के अंदर जो है they are converted again into ketone and alcohol, but in basic medium they are stable. So and hydrolyze in acidic medium. Hydrolyze होते हैं acidic medium में. For example, this is the acetal, acyclic, open chain acetal in presence of basic medium, no reaction. Or this is cyclic acetal in presence of basic medium, no reaction. But in acidic medium, it is hydrolyzed and again converted into ketone and alcohol. So now this is the four reaction. The first reaction was hydrogen cyanide. The second is the uh,
alcohol, and the third is the acetal formation, and fourth one is the addition of bisulfite. Sodium bisulfite NaHSO3 react with carbonyl compound aldehyde as well as ketone. The HSO3 because it is partially negative, it will be attached with electrophilic carbon which has partially positive charge, and the sodium will be attached with oxygen. So this is the nucleophilic addition reaction of sodium bisulfite to carbonyl. This is the reaction with aldehyde, and this is the reaction of ketone. G. Any question related to this talk? No question? ठीक है.